Good afternoon, students. Welcome to the virtual class, Sundargarh, and welcome to the teachers who those who are present in the class. Today we are here to discuss a person that is that will be covered in FA1, that means quarter 1. Okay, so let me introduce our friend Satyaranjan sir. Thank you, sir. Thank you very much. First of all, I wish you all a very happy and prosperous New Year. So, dear students, now you know it is the time of examination, and your board examination is actually approaching very fast. And keeping in view of your board examinations, this type of revision classes are being taken here in order to eradicate your problems, doubts, and especially based on your subjective and multiple type of questions. So today I will be discussing about with you some of the short questions and very short questions from the topic the Solitaryreaper and at the high schools, and the rest of the sections from grammar and others part, that is on-scene passage, etc. will be report writing will be discussed by Mr. Satyapriya Patel. And as you know, it is a co-presentation class. We both will take class. First I will take the class and then Mr. Patel will take the class for you. Thank you, Patel sir. So without delay, let's proceed to the smartboard and start the discussion. Okay. Very nice to meet you once again. Virtual mode of class. So in this revision section, I will discuss with you short questions and very short type of questions taken from your poem, The Solitaryreaper, and the prose, that is at the high schools. Okay. So let us take a question from the topic The Solitaryreaper. So see the question: what is the solitary girl doing? What is the solitary girl doing? This question is very important question for your forthcoming board examination, and you have already been taught this topic by your teachers in your respective schools. Question based on 50 words, and this question carries 5 marks. So most of the time we see students are actually leaving blank their papers in the examination halls, so far as your subjective paper is concerned. So let us try ourselves how to write something, how to cultivate some of the sentences in the examination paper, so that the answer will be satisfactory one and will be able to achieve some good marks in the examinations. So पिला माने आमे अधिकांश समय देखुछु जे बोर्ड परीक्षा रे पिला माने सब्जेक्टिव पेपर आसिले ता गोटे प्रॉब्लम होची आ से माने आंसर डाको लिखि पारु नाहांती. से माने जानु छंती ओडिया रे जानि छंती आ तांकर लिखिबार आईडिया भी ओडिया रे अछि, किंतु इंग्लिश रे लिखिला बेलकु से डरु छंती आ किछि लिखु नाहांती. So I will give you some of the tips. I hope the tips will be fruitful for you in order to write something in the examination. Okay, so you see the question: what is the solitary girl doing? What is the solitary girl doing? This question is otherwise known as what are the activities done by the solitary girl. देखो पिला माने एडी जो क्वेश्चन दिया छि, what is the solitary girl doing? एडी क्वेश्चन टाको देखो प्रथमे फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन अटेंटिवली. प्रथमे पिला माने क्वेश्चन टाको मन देखि पढिबो. What is the solitary girl doing? माने solitary girl एठी कोन करूछि. तमर फर्स्ट स्टैंजा को जिवो, you will go to the poem The Solitaryreaper, you will see what is the solitary girl doing. पिला माने देखो डूइंग माने से कोन करूछि और व्हाट आर द एक्टिविटीज. बेले बेले क्वेश्चन टाको हमें पढिबा व्हाट इज द सोलिटरी गर्ल डूइंग, आ परीक्षा रे क्वेश्चन आसी जिवो व्हाट आर द एक्टिविटीज डन बाय द सोलिटरी गर्ल. सर तो हमको एमपी क्वेश्चन देखि नथिले, त यू हैव टू डिफरेंट एंगल रो हमको ताको बुझिबार अछि, ताबले हमें ताको आंसर लिखि परिबा. सो व्हाट आर द एक्टिविटीज. एक्टिविटीज माने कार्यकलाप. माने एही क्वेश्चन रे हमें देखिबा जे सोलिटरी गर्ल सब कोन करूछि. सेकंड देखो व्हाट इज द सोलिटरी गर्ल डूइंग, एटा गोटे इजी रे अछि. क्वेश्चन ता प्रेजेंट टेंस रे अछि, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस रे अछि. सबले चेष्टा करिवो जे क्वेश्चन जो टेंस रे थिबो आंसर सेही टेंस रे तुम लिखिबा को चेष्टा करिवो. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अछि, आंसर ता प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस रे हबो. पिला माने सोलिटरीरेपर पढला बेले हमें एई क्वेश्चन को देखो व्हाट इज द सोलिटरी गर्ल डूइंग. से सोलिटरी झियोटा कोन करूछि. व्हाट आर द एक्टिविटीज. व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट आर डन बाय द सोलिटरी गर्ल. प्रथमे हमें देखिबा कोन करूछि. व्हाट इज द सोलिटरी गर्ल डूइंग. गोटे क्वेश्चन पचाइबा. यस, एटा कोन पंचायत हाई स्कूल द सोलिटारीरेपर पोएम को एटी क्वेश्चन को देखो पिला माने चिंता करो जे सोलिटारीरेपर कोन करूछि. व्हाट इज द सोलिटरी गर्ल. यस, alone in the field,
Yes. alone in the field, Yes, the girl is alone in the. reaping and singing, Very good. Reaping and reaping and singing, Very good. cuts and binds the grain, Yeah. cuts and binds the grain, Yes. cuts and binds the grain, Yes, yes. Cutting and binding the. sings a melancholy strain, Okay. sings a melancholy strain. Okay, okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Very good. बहुत बढ़िया. तो एठी देखो आमे पिला माने किछि सबेडिया गुडा को आमे एठी चिंता कलो तो माने समस्ते. मोटी किछि गुडा सबेडिया देइछि. ए आइडिया गुडा को लेइ कि तुमे सेंटेंस तयारी करिवो. व्हाट आर द सब आइडियाज टू सी. देखो पिला माने सोलिटरी रिपर आमे लेखिला बेले एई सब सब आइडिया नबाओ. दिस आर द सब आइडिया. देखो द स्कॉटिश गर्ल. द सोलिटरी रिपर इज ए स्कॉटिश गर्ल. She is reaping the corn. गोटे सेंटेंस हला she is reaping the corn. Then आउ जने कहउतलो she is binding the corn. एमती सेंटेंस डाको तुमे मन भितर चिंता करो. And the girl is alone in the cornfield. She is alone in the cornfield. आउ जने कहउतले कोन she is singing a melancholy strain which is otherwise known as she is singing a sad song. The girl is singing a sad song. Okay. And you see first stanza eta achi and the poet is passing by that way and he is enjoying the song. Okay, the poet is passing by that way and he is enjoying the song. तो एठी एक्टिविटी जे हमें कोन देखिबा जे जियोटा कोन कोड देखो फास्ट हमें जो एई आंसर को लिखिबा एठी कोन सब आइडिया आथले देखो दो सोल्टरी रिपोर्ट इज ए स्कॉटिश गर्ल देखो एठी से गोटे स्कॉटिश गर्ल ला तापरे व्हाट अदर एक्टिविटी सी डूइंग सी इज रिपिंग द कॉर्न. She is reaping the corn. That means she is reaping, cutting the corn. तापरे binding the corn simultaneously से कौन करुची ना corn को से बांधुची. Okay, and she is alone in the field. The girl is alone in the field and she is reaping the corn and binding the corn. The girl is singing a melancholy strain. Melancholy strain means a sad song. Okay, singing. The girl is singing गोटे एक्टिविटी चला से गीत गाउसी. तापरे हमें लिखला बेले एठी पिला माने कोन करिबा ना विलियम वर्ड्सवर्थ को विषय हमें एठी टिके लिखिबा जेहेतु 5 मार्क रो क्वेश्चंस हमें टिके वर्ड्सवर्थ को विषय लिखिबा एवं द पोएट इज पासिंग बाय दैट वे एंड द पोएट इज एन्जॉयिंग द गर्ल्स सॉन्ग. ए जो सबेडिया पिला माने देली स्कॉटिश गर्ल रिपिंग द कॉर्न बाइंडिंग द कॉर्न तापरे द गर्ल इज alone in the cornfield singing sad song. এই सब जो आमे जो सब आइडिया गुडा को नेले ए सब आइडिया को नेई कि पिला माने आमे गोटे क्वेश्चन रो आंसर आमे तयारी करि परिबा. हमको एमिति आंसर लिखिबा नै एटा पिला माने गोटे हिंट्स दिया गला आमे ताको रिकॉल करके ताको कन्वर्ट करबा सेंटेंस रे कन्वर्ट करबा. जदि सेंटेंस रे कन्वर्ट करि परिबा देन द आंसर विल बी ए गुड पीस वन. ओके नेक्स्ट आमे देखिबा तार आंसर देखो पिला माने मोटी केमती तार आंसर मु करिछि पिला माने देखो आंसर देखो सेट जो थिला देखो द सोलिटरी रिपर इज ए पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. देखो पिला माने द सोलिटरी रिपर व्हेन यू आर राइटिंग 5 मार्क क्वेश्चन इफ पॉसिबल you may mention the name of the poet so that you will get half mark from that side. Se side tu tume half mark pai paribo. So the Solitaryreaper is a poem by William Wordsworth. Right? किसी यदि न जानी पा मैंने तुम्हें यदि पोएट को ना लिखी देल भी तुम्हें से क्वेश्चन आंसर जहाँ लिख पोएट ना लिखिले भी तुम्हें हाफ मार्क बोर्ड रे पाई परिबो. सो द Solitaryreaper is a poem by William Wordsworth. The poet says the reaper is a Scottish girl. देखो सेठी गोटे मु तुमको सब आइडिया देथिली Scottish girl. So who is a Scottish girl? The reaper is a Scottish girl. Okay, that means the girl belongs to Scotland. That's where the girl is a Scottish girl. Next après alone गोटे वर्ड थिला पिला माने alone थिला कि नहीं आमे कोन लिखला she is alone in the cornfield. छोटो छोटो सिंपल सेंटेंस पिला माने लिखा जायछि she is alone in the cornfield. तापरे नेक्स्ट से झियोटा दुईटा काम साइमल्टेनियसली करूची गोटे रिपिंग करूची आ गोटे बाइंडिंग करूची गोटे रिपिंग करूची आ गोटे बाइंडिंग करूची. सो द गर्ल इज साइमल्टेनियसली डूइंग टू एक्शंस और टू एक्टिविटीज. वन इज रिपिंग एंड अनदर इज बाइंडिंग द कॉर्न. आमे ताकू चाहिले दुईटा सेंटेंस रे पिला माने लिखि परिबा she is reaping the corn full stop she is binding the corn एमिति भी लिखि परिबो किंतु आंसरटा भलो करे पई आमे वर्ड को कंडेंस करे पई आमे एठी कोन लगेलो ना पिला माने ग्रामर रो बोथ एंड वर्ड मोडी देछि. देखो तुम टाइप्स ऑफ सेंटेंस रे बोथ एंड लिखा जाइछि बोथ एंड पढ़ाइ छि कि नहीं तेनु एठी मु कोन कली she is both reaping and binding the corn. Otherwise you can write she is reaping the corn and she is binding the corn. At the same time she is also singing a sad song. At the same time माने ठीक सही समय से कौन करूची
এটা ବି ଗୋଟେ activity ସେ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି she is singing a sad song and you know the sad song is otherwise known as melancholy strain. If you do not if are not able to remember the spelling of melancholy strain, you can simply write a sad song. ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତମେ ସେଠି sad song ବି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବ the girl is singing a sad song. And ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ the poet is passing by that way. The poet William Wordsworth is passing means going by that way and enjoying her song. ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ 50 ୱାର୍ଡସରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ୱାର୍ଡ ବି କାଟି ପାରିବା the Solitaryreaper is a poem by William Wordsworth. ତାପରେ the poet says that କୁ ଆମେ ନ ଲେଖିକି ଆମେ ଏଠି ଯଦି ଚାହିଁବା ଏଠୁ the reaper is a Scottish girl. She is alone in the field. She is both reaping and binding the corn. At the same time, she is also singing a sad song. Okay, the poet is going or passing by that way and enjoying her song. Maximum 50 words रे पिला माने हमको आंसर लिखिबार अछि. Okay, 55 भी हेई पारे, 49 भी हेई पारे, 47 भी हेई पारे, that does not matter. Okay, you will have to answer the questions within 45 to 55 words रे तमे ताको आंसर को लिखिबो एवं जो सब जिंस गुडा को मेन आइडिया रहउचे ताको जदी फोकस करिवो you will get absolutely 5 marks. पिलान देखो जो एठी कोन अछि क्वेश्चन जो टेंस प्रेजेंट टेंस थला आंसर से टेंस अछि एवं वर्ब गुडी को देखो पिला माने सब जगह वर्ब दिया आइछि. ओके एठी देखो जेमति सब जगह ऑक्सिलरी वर्ब एठी ई जाउछि व्हाट इज द गर्ल डूइंग प्राय जगह इज वर्ब रे एठी हमर काम हो गेला पिला माने देखो. ओके तुम जदी बर्तन वर्ड को काउंटिंग करबाटा मैक्सिमम 52 53 वर्ड्स भितरे तुमर एटा स्टिपुलेटेड एई आंसरटा एठी हेई पारला. तेणु पिला माने एटा गोटे 5 मार्क क्वेश्चंस 5 मार्क क्वेश्चन को तुमे भल भाबरे लिखिबो एवं सब बेले परीक्षा हॉल रे तुमे रिकॉल करिवो सब आइडिया गुडी को से क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो एवं सेही आइडिया को नेई गिरी तुमे गोटे सेंटेंस तयारी करो तापे तुमे घरे भी प्रैक्टिस करि पारिबो क्लास रे प्रैक्टिस करि पारिबो एवं तुमर आंसरटा निश्चित रे भल हबो. तो मु भाबुची तुमे एई क्वेश्चन रो आंसरटा को पिला माने तुमे निश्चय बुझिथिबो जो क्वेश्चन देली व्हाट इज द सोलिटरी गर्ल डूइंग और व्हाट आर द एक्टिविटीज डन बाय द सोलिटरी गर्ल. पिला माने बुझियला तार एक्टिविटी जेटा गोटे तुमको मॉडल यार आंसर मु तुमको पिला माने देखैली आकु तुमे लिखिकी रखो जदी पारुछ एवं परवर्ती समय तुम एग्जाम रे काम देबो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ओके ठीक अछि. सो दिस क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. एटा 5 मार्किया क्वेश्चन पिला माने. ओके ठीक अछि. नेक्स्ट गोटे बर्तमान जिमा हमें 2.5 मार्क गोटे क्वेश्चन को जिबा पिला माने देखो 2.5 मार्क गोटे क्वेश्चन दैछि पिला माने एठी व्हाट डज वेलकम नोट्स मीन. व्हाट डज वेलकम नोट्स मीन, हु सिंग्स देम एंड व्हाई. देखो पिला माने दिस क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क. देखो एठी क्वेश्चन को पिला माने देखो फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन व्हाट डज वेलकम नोट्स मीन. एटा गोटे क्वेश्चन हला पिला माने व्हाट डज वेलकम नोट्स मीन्स एटा हला एटा इट कैरीज 1 मार्क एथरे गोटे मार्क पाइबो. सिंग्स देम आ गोटे क्वेश्चन अछि हु सिंग्स देम तापर आ गोटे क्वेश्चन अछि व्हाई. ठीक अछि. एठी 1 मार्क तापर ए दुईटा को मिसी करे आ 1.5 रहिला टोटल सब मिसी करे 2.5 मार्क एटा 2.5 मार्क्स एठी तमरो रहिला. हेले एठी आंसर हम केमती करिया देखो वेलकम नोट्स. फर्स्ट देखो व्हाट इज वेलकम नोट्स. वेलकम नोट्स जे क्वेश्चन आसला वेलकम नोट्स माने पिला माने कोन वेलकम सॉन्ग नहीं सोलिटारी पर अछि वेलकम सॉन्ग. हेले वेलकम नोट्स रे फर्स्ट कोन आसला व्हाट इज वेलकम नोट्स तापरे हु सिंग्स वेलकम नोट्स आ गोटे क्वेश्चन आसी गेला आसला कि नहीं. तापरे हुम डज इट सिंग कहा पई से वेलकम नोट्स ता गीत गाउची राइट. तापरे नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन आसला वेयर डज इट सिंग से केउ जगह रे प्लेस कोन वेयर डज इट सिंग से कोठी से गीतटा गाउची. एंड फाइनली व्हाई डज इट सिंग से कहीं कि से गीतटा गाउची. हेले बर्तमान पिला माने तुमे यार आंसर को चिंता करो डेफिनेटली विल बी एबल टू राइट इट्स आंसर. देखला व्हाट इज वेलकम नोट्स. फर्स्ट पिला माने पहलो देखि व्हाट इज वेलकम नोट्स. टेल मी एनी अदर स्कूल व्हाट इज वेलकम नोट्स. एनीबॉडी एल्स हु कैन से व्हाट इज वेलकम नोट्स. नोबडी एल्स. वेलकम नोट्स काउ कहबा वेलकम नोट्स. नोट्स माने कोन म्यूजिक. ओके ठीक अछि. देन नाउ टेल मी हु सिंग्स वेलकम नोट्स. whether it is the nightingale or the cuckoo bird. Who sings welcome notes? पिला माने welcome notes किए गए कैसी पंचायत है स्कूल. yes it is the nightingale or the cuckoo bird who sings welcome notes. okay ठीक अछि. देखो पिला माने what does welcome notes mean. welcome notes means sweet songs containing welcome message. पिला माने welcome note रो माने हला sweet songs containing welcome message. okay it contains a welcome message. okay so first question कोन थला what थला देखो what is welcome notes.
तुम्हें मन रख वेलकम नोट मीन स्वीट सॉन्ग्स कंटेनिंग वेलकम मेसेज वेरी गुड ठीक अच्छे पिला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था हु सिंग्स द वेलकम नोट्स डेफिनेटली इट इज द नाइटिंगेल सिंग्स द वेलकम नोट्स नेक्स्ट तापर गोटे क्वेश्चन मु कौन देइथिली whom does it sing the welcome notes कहा ପାଇଁ से welcome notes गाए it sings welcome notes for the tired travelers and where does it sings in the Arabian sense रे गीत गाए and why does it sings in order to console them in order to soothe them तांको सांत्वना देवा ପାଇଁ से अरेबियन डेजर्ट रे वेलकम नोट्स टा किए गाए नाइटिंगेल गीत गाए एटा तार आंसर टा पिला माने ठीक पढियो बहिटा को समरी को पढ हेले जानि परिबो देखो हेले वर्तमान देखो एई सब क्वेश्चन जो डब्ल्यूएस क्वेश्चन जो करा गला तार बेसिस रे आंसर टा देखो पिला माने केमति लिखाला 2.5 मार्क एठी अछि देखो सब क्वेश्चन जो मु जहां डिस्कशन करनी पिला माने लुक एट द स्मार्ट बोर्ड पूरा अटेंटिवली देखो पिला माने हु रो आंसर देखो देछि welcome notes means sweet songs containing welcome message so what is welcome notes you will have to remember welcome notes means sweet song containing welcome message देखो पिला माने what रो आंसर हे गेला हला कि नै पिला माने तापर कोन अछि पिला माने देखो who रो आंसर who sings them देखो आंसर the nightingale sings them who रो आंसर हे गेला right for whom okay for whom for the tired travelers where in the Arabian sands and where to soothe the tired travelers okay so welcome notes means sweet songs containing welcome message the nightingale sings them to soothe the tired travelers in the Arabian sands देखो यही सबुर आंसर गुड़ा आम जहाँ बाहर कला सेटा तार 2.5 मार्क तार आंसर टा हेगला एठी जो 2.5 मार्क अछि पिला माने एटा डेफिनेटली यू विल गेट 2.5 मार्क्स तमे जदी आंसर टा टू द पॉइंट और इफेक्टिव लिखिबो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन लिखिबो ताहले यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस तेणु पिला तमे टिके सब आइडिया गुडी को चिंता करिवो सब क्वेश्चन को निके प्रिपेयर करके सब आइडिया बाहर करो सार मान संगे मिसिकरी एवं सेही सब आइडिया को नेकी तमे सेंटेंस फॉर्मेशन करो देन यू विल बी एबल टू आंसर the very short answer type question and short question answer type questions. So I have already taken 2 questions from your the Solitaryreaper and now let us take a few questions from your at the high school. Okay, let us now take a question from at the high school. At the high school to go to 5 hour question नहीं जा पिला मने short question answer in about 50 words. पिला तुम जानी छो लास्ट क्लास में तुम कोई थी क्लासिफिकेशन मारे you will get 2 5 mark question one from poetry section and another from prose section. इस question carries 5 marks तार और भी तुम्हें रहिबो alternative भी पिला मने रहिबो. So let us now take question from at the high school. Good very important question I have said from your at the high school and the question is what were the reasons for Gandhi's dislike for cricket and gymnastics? What were the reasons for Gandhi's dislike for cricket and gymnastics? पिला मने ए question रो माने बुझी पाउछ तो कोनी गोटे स्कूल रो पिला माने कहलो क्वेश्चन रो माने कोन ए क्वेश्चन रो माने एनीबॉडी देखले को स्कूल गोटे टिकीपानी हाई स्कूल व्हाट वर द रीजंस फॉर गांधीज डिसलाइक फॉर क्रिकेट एंड जिम्नास्टिक्स व्हाट वर द रीजंस फॉर गांधीज डिसलाइक फॉर क्रिकेट एंड जिम्नास्टिक्स यस टिकीपानी हाई स्कूल यस टिकीपानी हाई स्कूल घरवाड़ी प्लीज स्टैंड अप पिक अप द माइक्रोफोन एंड टेल मी समथिंग इन ओडिया ओडिया को पिला माने क्वेश्चन रो माने कोन रीजंस माने कोन कारण पई कारण हां कारण पई हां कौन कारण पई गांधी जी क्रिकेट और जिम्नास्टिक को पसंद करू नथिले वेरी गुड बहुत बढ़िया क्वेश्चन बुझो तो तामने तुम्हें केउ कारण पई गांधी जी बा मोहनदास बा महात्मा गांधी क्रिकेट और जिम्नास्टिक्स को पसंद माने कोन सॉरी बुझी डिसलाइक करथले सॉरी डिसलाइक करथले ठीक अछि थैंक यू बस हेल देखो यू नो देखो क्रिकेट एंड जिम्नास्टिक्स ए दुईटा जिंस मिस्टर जिमी हेडमास्टर किए थिले मिस्टर जिमी नै के दोराबजी इदुल जिमी हां यस वेरी गुड मिस्टर दोराबजी इदुल जिमी कोन करथले क्रिकेट और जिम्नास्टिक्स को से कंपलसरी करथले आ महात्मा गांधी क्रिकेट और जिम्नास्टिक्स को डिसलाइक करथले राइट एवं से डिसलाइक करबार तार तीनटा रीजन थिला नै के गुटे रीजन थिला कोन यस हिट साइनेस वेरी गुड आ कोन हां यस सेमति कहलो साइनेस गुटे थिला false notion that gymnastics has nothing to do with education
Yes, very false good. notion that gymnastic has nothing to do with education. Very good. Anything else? बढ़िया बढ़िया. Sentence करी पारुचो तमे. To serve as nurse to his father. Very good. बढ़िया. सब पॉइंट तो कहलो पिला माने. बढ़िया. ठीक. Thank you. बर्तमान देखो तमे जो सबेडिया देलो मते से सबेडिया गुडू को मठी देखिली देखो. Mr. Jimmy किए थे? Mr. Jimmy was the headmaster. Mr. Dorabji Idulji, Jimmy was the headmaster. And you know compulsory ले उड़े बाक्य करो. Compulsory ले उड़े sentence करो पिला मने. Anybody else? Switch off the microphone. Switch off the microphone. Compulsory पिला मने. Compulsory ले उड़े गुडे sentence की Gandhiji made gymnastics and cricket for the upper standard compulsory. हाँ तो मैं कहूँ तो गांधीजी नुहे सेटा मिस्टर जिमी और गांधी हेडमास्टर कहूँ तो ठीक है मिस्टर जिमी ठीक है मिस्टर जिमी वेरी गुड मिस्टर जिमी हैड मेड कंपल्सरी जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट फॉर द बॉयज ऑफ द अपर बहुत बढ़िया ठीक सेंटेंस है गेला अच्छा डिसलाइक हाँ डिसलाइक लोग बाइक करो हु डिसलाइक Gandhiji dislike both cricket and gymnastics. Very good. अच्छा तापरे नेक्स्ट करिया साइनेस लगिरी गुटे आंसर कलो साइनेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनेस के गांधी जी के लाजुकुला थिले नहीं के हिज साइनेस वाज वन ऑफ द रीजन नहीं के तापरे फॉल्स नोशन हां फॉर डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट वेरी गुड फॉल्स नोशन की कहलो फॉल्स नोशन माने कोन gymnastics has nothing to do with education. Very good. Gymnastics had nothing to do with education. माने गांधी जी को education जे हां एजुकेशन संगरे शिक्षा संगरे जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन माने सेतरे किछि तालुक नाही से गेम स्पोर्ट्स अलगा आ हमर पाठ पढाटा अलगा वेरी गुड एटा भी सेंटेंस हला तापरे आ गुटे किन टीचर जने कहउथलो से किन टीचर गुटे सेंटेंस के कहलो किन टीचर माने गांधी जी yes to serve yes to service very good right ठीक अछि हेले गांधी जी पापा बहुत माने सबले इल दोउतले से ओल्ड एज रे थिले आ गांधी जी वांटेड टू सर्व हिज फादर एज नर्स हिसाब रे तांको सेवा करिया को चाहुतले सो दिस वर द रीजंस फॉर गांधी जी डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट तो ये जो सबेडिया पिला माने कहिलो तुम तो बढ़िया कहउछ पिला माने बहुत सुंदर तो माने सेंटेंस करि पारुछ मु जानु छे तममान को पाखरे पिला माने हिडन ट्रेजर अछि तुम पाखरे तुम चेष्टा कले करि परिबो पिला माने बहुत सुंदर कहिलो को स्कूल कहिलो मु तो सब जानि पारुनी एनीवे तुम बहुत बढ़िया कहिछ वर्तमान हमें तार आंसर टाको देखो गुटे मु तुम गुटे देखौछि मॉडल देखो এই आंसरটা केमती मु तयारी करछि देखो पिला माने এই सन डायग्राम पिला माने करियो पड़िबोनी एटा जस्ट खाली तुमको गोटे आईडिया दोछि पुनी थरे एठी गोटे सबडिया तुमको रखली देखो केमती लिखा हला आंसर केमती लिखा छि 50 वर्ड्स रे केमती लिखा हबो मैक्सिमम 50 टू 55 भी चलिबो कोन देखो मिस्टर दोराबजी इडुलजी जिमी the headmaster had made gymnastics and cricket compulsory for the boys of the upper standard देखो पिला माने गोटे लंबा सेंटेंस हे गेला सर बहुत लंबा सेंटेंस लिखि देले तो जदि डरुछ एमती करिवो मिस्टर दोराबजी इडुलजी जिमी वाज द हेडमास्टर गोटे सेंटेंस कर देलो देन तापर लिखि दबो ही हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड ओके और यू कैन राइट ही हैड मेड कंपल्सरी फॉर द बॉयज लिखि देले भी चलिबो अपर स्टैंडर्ड जदि भूली जाउछ भी चलिबो ओके नेक्स्ट गांधी disliked boat not गांधीजी गांधी कहबो बाय दैट टाइम ही वाज नॉट गांधीजी हेतले से गांधी थिले मोहनदास करमचंद गांधी सो तापर आ देखो डिसलाइक वर्ड कोनला आडी तुम जो कहलो सेंटेंस मु लिखिली सेठी एटा मु लिखिनी पिले तुमे लिखिछो यू हैव रिटन दिस आंसर आई हैव नॉट रिटन दिस आंसर एटा तुमरो आंसर पिला माने गांधी disliked both dislike like रो पूर्व रे प्रीफिक्स लागेला dislike दैट मींस गांधीजी डिड नॉट लाइक तापरे दी रीजन्स वेयर देखो एठी पिला माने 5 मार्क्स रु एठी 2 मार्क तमे कवर करि गलो मिस्टर जिमी वाज द हेडमास्टर ही हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड गांधी डिसलाइक बोथ तापरे आ गुटे क्वेश्चन देखो अछि व्हाट वर द रीजन से क्वेश्चन को दुई बार व्यक्त कराइछि ओके आ गुटे क्वेश्चन व्हाट वर द रीजन्स देखो द रीजन्स वेयर
What where थिला सेठी क्वेश्चन तेनु सही क्वेश्चन रो where टाकू द रीजंस where तीनटा रीजन थिला नहीं कि नंबर 1 रीजन कोन थिला his shyness was one of the reason. Next थिला कोन he had the false notion देखो the false notion लिखाई छी he had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. Right, it had nothing to do with education. Gymnastics रा कोन अछि education सहित तार कोनसी लिंक नथिला. Then the third one is his keen desire to serve as nurse, not as a nurse, to serve as nurse to his father. His keen desire. What is the meaning? Keen desire माने ताकर गोटे गभीर इच्छा थला. He was very much enthused. He was very much eager or interested to serve his father as a nurse because his father was very ill. Most of the time he remained ill. ताकर बापा बहुत बुढ़ा थिले रुग्ण रहउथिले तेणु से बापा को सेवा करिया को चाहुथिले तेणु एटा गोटे कज आसला his keen desire to serve as nurse to his father. एई तीनटा रीजन पिला देखो 1 एठी आसला 1 एठी आसला 1 एवं एई ऊपर आसला एठी 2 हेले टोटल 2 + 3 5 बार हला कि नै पिला माने you can write the answer गोटे पैराग्राफ रे मिसै कि तुम ताको लिखि पारिबो एठी तुम जानिया पई मो 1 2 3 पॉइंट कर देली तुम ताको मिसै कि लिखि पारिबो तो एई आंसर पिला माने एमिति तुम चेष्टा करले you will be able to write in the examination you will write good answers आ तुमको मार्क मिलिबो आ तुम ब्लैंक पिला माने काइंडली टिके मु रिक्वेस्ट करछि तुम ब्लैंक छाडोनी तुम चेष्टा करो किछि नले तुम 2 3 चैप्टर एट दी हाई स्कूल जेमति हला वा ए लेटर टू गॉड ए दुटा पाठ को प्रिपेयर करो you will definitely get one question ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट आ गोटे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें जीवा वर्तमान देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 25 वर्ड्स 2.5 मार्क्स सेकंड फ्रॉम योर एट द हाई स्कूल रो आ गोटे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देछि देखो एटी सबेडिया मु देछि पिला माने तमे चाहिले देखि कि भी सेंटेंस तुम आडू कर पिला माने क्वेश्चन ता देखो पिला माने पढो हु वाज द हेडमास्टर व्हाट वाज ही लाइक क्वेश्चन देखो पिला माने who was the headmaster what was he like मते एनी स्कूल टिके ई क्वेश्चन रो माने कहिलो यस गोटे स्कूल लगेले गोटे एनी अदर्स हां प्रधान शिक्षक किए प्रधान शिक्षक थिले यस हां वेरी गुड किए प्रधान शिक्षक थिले हां बढ़िया बहुत बढ़िया सुंदर पूछो जियो तांगर पसंद कोन थिला तांगर पसंद कोन थिला अच्छा ठीक अछि गुड बस तुमे बस आउ जने काकू देलो आउ जने आउ की कहलो जने देखिबा बढ़िया कहलो फ्रीक्वेंटली कहउछ धन्यवाद नेक्स्ट आउ की जे कहलो की हो तो क्लास रे माइक्रोफोन दियो आउ जने को चेष्टा करो यस हु वाज द हेडमास्टर व्हाट वाज ही लाइक उडिया कोन हबो क्वेश्चन तो के बुझिबा यस स्कूल पिला माने फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन जिमी वाज द हेडमास्टर हां ठीक अछि अब यार अर्थ कोन व्हाट वाज ही लाइक he is a disciplinarian man हां वेरी गुड भेसरे आंसर कहउछ क्वेश्चन रो माने कोन ठीक अछि पिला माने देखो पिला माने मु कहउछ हु वाज द हेडमास्टर एटा ठीक कहलो व्हाट वाज ही लाइक एटा पिला माने जे प्राय पिला माने एई क्वेश्चन रे कंफ्यूज होंती आ बोर्ड रे एमतिया क्वेश्चन आसीबो हमें कोन नॉर्मली हम लाइक कहले पसंद करबा को बुझी थाउ नै कि व्हाट इज योर मदर लाइक ता माने एटा नो जे तमर मां को कोन भल लागे नै कि व्हाट डू यू लाइक तुमको कोन भल लागे नै आई लाइक क्रिकेट सेटा नुहे व्हाट वाज ही लाइक माने से केउ भलिया लोक थिले व्हाट वाज द पर्सनालिटी ऑफ द हेडमास्टर और व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज द हेडमास्टर बुझी पले पिला माने ठीक है देखो एटी टिके अटेंशन नियो ए क्वेश्चन से परीक्षा तुमको टिके कंफ्यूज करिया पई एमता क्वेश्चन दिया आइछि किंतु ए क्वेश्चन रो माने तांको कोन भल लागुतला मिस्टर जिमी को सेटा नुहे माने से केउ पर्सनालिटी लोक थिले और व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज मिस्टर जिमी से क्वेश्चन रो आंसर ता हमें लिखिबाटी ठीक अछि पिला माने भलो कहलो देखो एटी दुईटा क्वेश्चन अछि एटी 25 वर्ड्स अछि ए दुईटा क्वेश्चन रो बेसिस रे आंसर करबा फर्स्ट हु वाज द हेडमास्टर लिखि देले 1 मार्क पिला माने हु वाज द हेडमास्टर तुमको जणा अछि एनीबॉडी एल्स के नुवा पिला कहलो हु वाज द हेडमास्टर जणा थियाई कहलो हेडमास्टर को नाम व्हाट वाज द नेम ऑफ द हेडमास्टर लेफ्री पढ़ा गर्ल्स स्कूल यस हु वाज द हेडमास्टर यस Dorabji Dulji Gimi was the headmaster वेरी गुड Dorabji बहुत Dulji बढ़िया Gimi was the headmaster
बहुत सुंदर कहिस बस थैंक यू देखो ये 1 मार्क तुम पाइगल एठी पिला माने देखो दुर्बल पिला हु जो अच्छी क्वेश्चन टा ए हु जगह रे मिस्टर ए जो दोराब जी इदुल जी जी मिस्टर लिखा दरकार भी नहीं ए जो लिखिलो ए सब आइडिया एठी हम एटाको इंसर्ट कर दबा मु एठी लगाइली मिस्टर दोराब जी इदुल जी जिमी वाज द हेडमास्टर क्वेश्चन मार्क को हमें लिभे देला गोटे मार्क पिला समय स्कोर करि गलो किंतु अनेक समय ताकू भी पिला माने लेखु नाहंती अनेक पिला तेणु समस्त को क्लासरूम रे हेल्प करो जो मैंने भल पिला आस समस्त को आइडिया दियो निजरी प्रैक्टिस करो समस्त प्रैक्टिस हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट वाज ही लाइक वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने तो परीक्षा रे आसीगले मते मने पगुथो पिला माने व्हाट वाज ही लाइक माने तांकर पर्सनालिटी कोन थला देखो जेतबेले गांधीजी पिला माने 7th स्टैंडर्ड रे पढुतले सेति बेले दोराब जी इदुल जी जिमी तांकर जने प्रधान शिक्षक थिले आ से केमिता लोक थिले पिला माने देखिलो कहलो ठीक केमिता लोक थिले ही वाज ए कोन लिखाइछि डिसिप्लिनेरियन पर्सन नहीं कि जड़े श्रृंखलित व्यक्ति थे आउ कौन थे जड़े मेन ऑफ मेथड थे पद्धति संपन्न लोक थे प्लानिंग करके काम करुले से जड़े गुड टीचर थे यहाँ सब फ्रेज नहीं देख हि वाज ए गुड टीचर हि वाज पॉपुलर एमंग दी बॉयज हि वाज मोस्ट पॉपुलर एमंग दी बॉयज एतिकी आंसर हमको लिखबार अच्छी पिला माने देखो मने पड़ला पिला माने हेले एठी आंसर केमती लिखिबा कि कहबो टिके बनेल निज आडू सेंटेंस टे करबो टिके यस गोटे स्कूल लगेले हाँ कुह एटा को स्कूल यस डिसिप्लिनारियन लगे गोटे सेंटेंस कर डिसिप्लिनारियन हु वाज डिसिप्लिनारियन यस मिस्टर Dorabji Idulji was a disciplinarian man. Yes, disciplinarian. He was a disciplinarian person and a man of method. Compound कर दो. He was a disciplinarian and a man of method. He was also a good teacher. एमती सेंटेंस को भाई सिंपल सेंस लिखिबो. He was also a good teacher or he was a good teacher. Was माने थिला. He was a good teacher. Finally he was popular among the boys. से पिला मान को भीतर अति लोकप्रिय थिले. देखो एई सबेडिया को नेले पिला माने एठी तुमे 1 मार्क एथिरे पाइलो तापर एठी पाइलो तुमे 1.5 1.5 मार्क एठी पाइलो. देखो आंसर केमती लिखाई तळे देखो दोराबजी इदुलजी जिमी was the headmaster of the school when Gandhi was in 7th standard. ठीक अच्छे है तो मुझे डिफिकल्ट होची तुम लिखि देबो दोराबजी इदुलजी जिमी was the headmaster. ओके तापरे when Gandhiji was in 7th standard लिखा दरकार नहीं. You can write or you may not write. Okay, he was a disciplinarian. देखो ये वर्ड ना देखो एडजेक्टिव गुडा को लिखा देखो. He was a disciplinarian, a man of method. Disciplinarian गोटे वर्ड आसला गोटे फ्रेज तापरे a man of method, right, and a good teacher. He was a disciplinarian, a man of method, and a good teacher. So he was popular among the boys. That's why he was popular among the boys. Why he was popular among the boys? Because he was a disciplinarian, a man of method, a good teacher. That's why he was popular among the boys. सेइतमे से पिला मानक भितर बहुत प्रसिद्ध थिले. ओके ठीक अछि. तो एटा हला 2.5 मार गोटे क्वेश्चन रो आंसर मु देली. एमथि आहुरी अनेक क्वेश्चन अछि पिला माने बहिरे तमे से क्वेश्चन आंसर गुडी को सिलेक्ट करिकरी पढिबो प्रैक्टिस करिवो सब आइडिया गुडी को बाहर करिवो आ तुम सार को साथ कंसल्ट डेफिनेटली लिखि पारिबो. पिला माने कहि पारुछ बढ़िया करूछ तेणु मु आशा करूछि तमे नेक्स्ट क्लास नेला बेलू तुम आहुरी किसी भल आइडिया तुम पाई पार. सो थैंक यू. राइटली इट इज टाइम फॉर योर सत्यप्रिय पटेल सर. ही विल टेक द क्लास फॉर यू. सो दैट्स ऑल. थैंक यू. Thank you very much, sir. Very much. Once again, good afternoon, students. See, here is a printing mistake. Something I found here. Let me show some printing mistake here. And normally we can change this particular AS here. Okay. We can. Welcome notes. Why does it sing? Okay. एटा प्रिंटिंग मिस्टेक AS हेतला तो सेटा पिला बले तो देखियो टिके जेतला हम डॉज यूज करूछु सर जानि छन से कहले सिंग बोली कि किंतु लेखा इतना सिंग तो मु सेटा टिके वर्तमान को जणे दोछि काले तुमे से बळे किछि एरर करिवो नाही. ओके दैट्स फाइन. बहुत बढ़िया क्लास नेले सर. आप तुमन को बहुत सुंदर भाव में प्रेजेंट करछन्ते सेटा का बहुत बढ़िया जानिबा कथा जोटा कि सब बळे आमे जानू गोटे सैंपल आंसर तुमको न दे जो पॉइंट विच तुमको जनइले जे ए क्वेश्चन ए सब पॉइंट गुटे आसबो एवं ए क्वेश्चन गुटे ऐसा करबा पहिले ए सब आउटलाइन गुटे ध्यान देवा कथा. दैट्स फाइन. बहुत बढ़िया आइडिया. तो वर्तमान आमे जीवा गोटे अन्य एक इंपोर्टेंट पार्ट को जोटा कि तुमनकर अनसीन पैसेज आसे
5 मार्क पे जोटा कि आगु 10 मार्क थिला किंतु गत वर्ष एटा 5 मार्क कर दिया जायछि तो इट इज वेरी मच इंपोर्टेंट पार्ट ऑन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो एतरे चाहिए तो 5 ରୁ 5 मार्क मध्ये बहुत सहज आसी परिबो आनी परिबो तो हाउ कैन यू सिक्योर द 5 मार्क्स आउट ऑफ 5 that will the trick we can discuss here. Okay, so you see it is a paragraph here. The paragraph, after the paragraph there are 5 questions and you have to read this paragraph once or twice. तो कोई paragraph थोड़े कि मध्य थोड़े पढ़िबार अछि तो आपने क्वेश्चन को जीवार अछि एवं क्वेश्चन गला पर आमे ताको अंडरलाइन करिवा ठीक अछि बर्तमान paragraph पढ़ी देबा को माने केई जणे अछि कि ठेकी पढ़ी परिबो paragraph पिले anyone who please read the paragraph is ancient times Pataliputra was the capital of Maurya Empire In ancient times, Pataliputra was the capital of the Maurya Empire under In accident time, Bindusar and Ashok. After the Kalinga War, Ashok set up a Buddhist council here. Also from here he sent out passengers of peace to the king of other land. Sher Shah built the city of Patna on the site of the ancient city. बहुत बढ़िया built okay Sher Shah built the city of Patna on the site of the ancient city. Now question number 1 बर्तमान क्वेश्चन नंबर 1 को जीवा हु बिल्ड द सिटी ऑफ पटना बर्तमान पैसेज देखुचे पैसेज रो हमें बाहर करिवा को जगह से उत्तरटा अछि हु बिल्ड द सिटी ऑफ पटना नॉर्मली कोन होए पिला वाले चिंता करंती जे एक नंबर प्रश्न उत्तरटा प्रथम दुटा लाइन रे थिवो ना से बडे मते होए नै नाउ वी कैन फाइंड हु बिल्ड द सिटी ऑफ पटना व्हाट इज द आंसर हियर Sher Shah built the city of Patna. हां हम देखिवा को जगह उत्तरटा अछि Sher Shah build the city of Patna upon seat of the accident city. No, जो मु अंडरलाइन जो करली एई उत्तरटा अछि उत्तर देख को जाय अछि Sher Shah build the city of Patna हमें प्रथम रो उत्तरटा पाए माने सब बेले फर्स्ट लाइन रे किबा सेकंड लाइन रे उत्तरटा मिलिबो नै ए तो ट्रिक कर दिए अछि हु बिल्ड द सिटी ऑफ पटना उत्तरटा में को जाय अछि Sher Shah हु जगह रे हमें Sher Shah को लगे दबा एवं जे वाक्य लिखिबा ताले यू कैन गेट 1 मार्क इज इट एटा हे गेला लिखी दो नोट करियो तुरंत नोट करू था Sher Shah बिल्ड द सिटी ऑफ पटना एति के लिखला माने 1 मार्क मिल गेला हु जगह खाली Sher Shah को बसे दबा आ बाकी जेंति सेंति होछि सेकंड क्वेश्चन व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना व्हाट इज द आंसर एटा आंसर को जगह रे अछि देखिलो टिके व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना एटा बड इन्फरेंशियल क्वेश्चन तो टिके गेस करिवो डायरेक्ट उत्तर किछि नाही एतरे तो गेस करिवो कोन हेई पारे कोटा हेई पारे तो लंबा नाटे अछि फर्स्ट लाइन रे हिटलो लंबा नाटे अछि कोन नाटे कहिला व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना फर्स्ट लाइन रे ही पिला बन अछि फर्स्ट लाइन रे ही तार नाटे अछि व्हाट इज द नेम Putra. yes good Pataliputra was the ancient name of Pataliputra was the ancient name of the Patna. okay fine बहुत बढ़िया बहुत सुंदर वर्ड जगह रे पाटलिपुत्र वाज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना वर्ड जगह रे मध्ये में पाटलिपुत्र को लगे देले एक बार मिल गला किछ असुविधा नहीं यू कैन गेट इट थर्ड क्वेश्चन व्हाई वाज द एंशिएंट सिटी फेमस व्हाई वाज द एंशिएंट सिटी फेमस एंशिएंट सिटी जोटा अछि ओटा पाटलिपुत्र सेटा काहे की फेमस थिला व्हाई वाज द एंशिएंट सिटी फेमस को जगह रे उत्तर देखिले पिले व्हाट इज द आंसर देखो ता तळे 2 नंबर लाइन को देखिलो टिके कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर under the Chandragupta, Bindusar and Ashok. Hey, Akichi, anything, any idea? Importance kahe ki thala? Kahe ki thala famous thala? Famous ete pe thala because it is the capital. Pataliputra was the capital of Mauryan Empire under Chandragupta, Bindusar एवं Ashoka. तीनोटी संप्राण करो से capital thala. Pataliputra capital thala. That's why it is. That's why the ancient city is famous. Pataliputra was famous because of it was the capital of Mauryan Empire. It was the capital under Chandragupta and Bindusara and Ashoka. EU line ta achi tomar pila mane Pataliputra eta the capital of Mauryan Empire under Chandragupta, Bindusara and Ashoka. Ete pe seta famous thila. Is that clear? Number 4. What did Ashoka set up in the city after the Kalinga war? What did Ashoka set up in the city of after Kalinga war?
कलिंग वार पर अशोक कौन सेटअप करते कौन सेटअप कले पिला बुझ कौन सेटअप करते कौन गोटे तैयारी करते ना से कौन गोटे बसई थे से कौन करते देखिल ये कौन लिखाई देखिल वेरी गुड मोदी अशोक सेटअप यस वेरी गुड एथे कौन हम हाँ यस अशोक सेटअप अशोक सेटअप हाँ अशोक सेटअप यही जगह जो आम नाट लिखिद बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक सेटअप बुद्धिस्ट काउंसिल इन द सिटी आफ्टर द कलिंग वार ठीक अच्छे ये सेटअप रही तार किसी परिवर्तन हम ना पास्ट टेंस में सेटअप प्रेजेंट टेंस में सेटअप रही ओके देन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट मैसेज डिड इज सेंड टू अदर कंट्रीज व्हाट मैसेज डिड इज सेंड टू अदर कंट्रीज एटा देखिलो टिके इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन अछि टिके चिंता करिवा हमें एथरे अछि उत्तरटा अछि टिके ताको चेंज करिवा चेंज तो करिवा नै मेसेज चेंज करिवा नै ता मेसेज ता कोन थिला देखिला को जगह रो उत्तरटा देखिलो टिके आई परियो तो माने बुद्धिस्ट काउंसिल पर जो वाक्यटा देखिलो टे पढलो ताको काउंसिल पर कोन लिखा जाय छै He sent out messenger of peace to the king of other land. Messengers of peace of the kings of other land. Other land. Very good. बहुत बढ़िया. Ashoka sent messengers of peace to the kings. To the kings. এটা kings हो. Apostrophe लगी हो नहीं? Kings of other lands. Okay. तो ये जो messengers of peace. एटी कुने कौन कहला? What message did he send? What message did he send means obviously कौन है तो message of peace. कि नहीं? शांति रा दूत पठे दिले. That means शांति में वार्ता पठे दिले. That's why you can write he sent message of peace. Sent message of peace to the kings of other lands. ये पांचटी उत्तर तो पिलाने पाएगा Yes or no? Yes. Okay. Let us see what is the answer. Okay, fine. बहुत बढ़िया. तो एटा देखो तो मैच कर दो तो उत्तरटा को वर्तमान नंबर 1 क्वेश्चन थिला व्हाट हु बिल्ड द सिटी ऑफ पटना शेषा बिल्ड द सिटी ऑफ पटना तो कहलो व्हाट आर द एंशिएंट टाइम ऑफ पटना व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना पाटलिपुत्र वाज द एंशिएंट ऑफ पटना एटा मध्ये तुम कहलो व्हेयर वाज द एंशिएंट सिटी फेमस एटा मध्ये तुम कहि देछो एंशिएंट सिटी फेमस बिकॉज़ ए फॉर्म टे हमें लिखिबा देखो उत्तर जे लिखु जे हमें टे ए फॉर्म लिखिबा व्हाय जे तो क्वेश्चन ता अछि तनो द एंशिएंट सिटी फेमस द एंशिएंट एटु आरंभ करिबा द एंशिएंट सिटी was famous the ancient city was famous it is likhiba the ancient city was famous because it was the capital of Mauryan empire under the rule of Chandragupta Bindusar and Ashoka eta modhe tu koicha channel question thala what did Ashoka set up kortala Buddhist council in the city of Pataliputra after the Kalinga war eta question ro achi khali ame likhi dele kon lekile a Buddhist council एटा थिला उत्तर हमें पढ़ी छे एंड व्हाट मैसेज डिड ही सेंड टू द अदर कंट्रीज ही सेंड मैसेज ऑफ पीस एटा मध्ये कहला राइट ही सेंड मैसेंजर्स ऑफ पीस हमें अन्य ओरे को कहबा ही सेंड मैसेज ऑफ पीस टू द अदर कंट्रीज त एई पांचटी प्रश्न देखा बिला बने एटा हमर सीधा सड़क प्रश्न उत्तर थिला तीनोटी प्रश्न थिला नंबर 1 नंबर 3 नंबर 4 एवं नंबर 2 एंड 5 टाकू टिके इन्फॉर्मेशनल क्वेश्चन देछि तो चिंता करिवो जे सेतरे रिलेटेड वर्ड कोन अछि ताको रिलेटेड वर्ड को निजे टिके चिंता करी उत्तरटा लिखिबा अछि तो एई बडे हमें प्रैक्टिस करिवा देखिबा शिक्षक तुमको प्रैक्टिस करेबे एवं इजीली या को तो निश्चित भाव अटेंड करिवो काहे 5 मार्क तुमको अति सहज रे आनी परिवो तो किछि असुविधा हो नहीं ठीक अछि तापर हमें गोटे जेबा अन्य एक पार्ट को जोटा कि रिपोर्ट राइटिंग को आइ अछि एथरे क्वेश्चन दिया गला ये रिपोर्ट राइटिंग रे कोन होय हमारा समरी राइटिंग किंबा रिपोर्ट राइटिंग हमारा जितने एग्जामिनेशन हुए जितने हमारा गोटे क्वेश्चन दिबा यू हैव टू राइट आइदर समरी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग तो समरी राइटिंग बदल रे रिपोर्ट राइटिंग आसीबो तो रिपोर्ट राइटिंग लिखले बेलको हमें ये गोटे क्वेश्चन तुमको सैंपल दिया गला एथे लिखा अछि एनीवन हु कैन रीड दिस क्वेश्चन ये पढ़ी परिबा क्वेश्चन टाको Suppose you are Rakesh Mishra of Sundargarh, working as a reporter for the Indian Express. Write a report for your newspaper narrating how the Children's Day was celebrated in Govt High School, Ujjalpur. Government High School, Ujjalpur. Okay. Who is the writer here? Who is the reporter here? It is reporter ki achanti? Reporter ki achanti? Rakesh Mishra. Rakesh Mishra.
तांकर एड्रेस कौन अच्छी सुंदरगढ़ सुंदरगढ़ अच्छी सुंदरगढ़ ओके तांकर कौ न्यूज़पेपर पे से काम करंती कौ न्यूज़पेपर पे काम करंती इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस द इंडियन एक्सप्रेस व्हाट इज द मैटर कौन पे रिपोर्ट करबा छी तांको नरेट चिल्ड्रन डे करिवे सेलिब्रेशन हां चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन ताको स्कूल हेतला ताको से रिपोर्ट करिवे इंडियन एक्सप्रेस पाखको इंडियन एक्सप्रेस पाखको रिपोर्ट करियो माने का को रिपोर्ट करिवे जानि परिबो कि कहि परिबो का को रिपोर्ट करिवे सिए whether editor whether the secretary whether the director का को रिपोर्ट करिवे का को रिपोर्ट करिवे एडिटर गुड वेरी गुड एडिटर एटा जे कथा हमर क्वेश्चन रो केतरा जिस जानिबा कथा विथ द रिपोर्टर व्हाट इज द एड्रेस एवं डेट ता देखो डेट ता हमर साधारणतः चिल्ड्रंस डे कोले हम समस्त जानिछु 14 नवंबर ना डेट ऑब्वियसली 14 नवंबर सेटा रहिबो किबा जो डेट तुम लिखिबो सेटा मते लिखि परिबो किछि असुविधा नै तणो प्रथमे जानिबा कथा जे हमर रिपोर्टर किए एड्रेस कोन डेट कोन एवं को पेपर पे रिपोर्ट करा जाय अछि एवं कहा विषय रिपोर्ट करा जाय अछि एवं कौ जगह कामटा होछि हला इन गवर्नमेंट एस उज्जलपुर ए जो केतरा जिनिस तुम क्वेश्चन पाई परिबो जे क्वेश्चन पाई साला पर ताकू ठीक जगह जे लगे दोछ ताले तुम 3 मार्क पाई जाउछ एतरे 5 मार्क अछि टोटल 5 मार्क अछि ए 5 मार्क पाई तुमको किटे गोटे फॉर्मेट मु बतेबी वर्तमान से फॉर्मेट जे ठीक जगह लिखि दोछ ए थ्रू बाहर करिवो से फॉर्मेट ता जगह बसै देला एवं देखिबो तो आराम रे 3 मार्क पाइबो किंतु मनके पड़िबो जे तुमको किछि कंटेंट ता देबार अछि एवं कंटेंट देवा पे हेले मध्य तुमको सेही जिंस देखिबा अछि तुम चित्रे को माने एग्जांपल अछि कोन व्हाट कहले तमरो कोन सब हबो सिद्ध कोन सब होछि व्हेन केते बेला होछि एवं को माने इन्वॉल्व अछंती हु आर द पार्टिसिपेंट एवं केमती भाबरे होछि ए केतरा जिंस पॉइंट करिवो नोट करिवो ए लेकि तो हमें पुरा रिपोर्ट टे लिखि परिबा देखिबा ओटे सैंपल ठीक अछि रिपोर्टर बता के थिले राकेश मिश्रा कि नहीं राकेश मिश्रा किए थिला तांकर एड्रेस ते रिपोर्टर अछन इंडियन एक्सप्रेस सुंदरगढ़ रु तो एथरे तुमर हाफ मार्क अछि एवं डेट देखा एटा तुम डेट दिया गला एथे मध्ये हाफ मार्क अछि तुम ए दीटा मु कहिथिल तुमको से क्वेश्चन रे राकेश मिश्रा ना पाइले हमें सी द रिपोर्टर हियर कोठी का रिपोर्टर इंडियन नेशनल रिपोर्टर एड्रेस हला तांकर सुंदरगढ़ डेट हला 14 नवंबर 2024 ये जो फॉर्मेट डेट रा फॉर्मेट पिला mo रखिबो टिके जदी तुम लिखि देबा 14/11/2024 इट विल बी रॉन्ग ये बडा लिखिबो तालेडा भूल होइबो संपूर्ण रे भूल होइबो हां तुम एटा लिखि परिबो 14 नवंबर लिखि परिबो नवंबर 2024 एटा मते लिखि परिबो तार चारटा फॉर्मेट अछि 14 नवंबर और नवंबर 14 नवंबर और नवंबर 14 ये चारि फॉर्मेट तो लिखि परिबो किंतु एई फॉर्मेट केबे लिखिबो नाही हमर जेमते नॉर्मली हम डेट लगुछु डेट फॉर्मेट केबे लिखिबो नाही हमें एठु आरंभ करिबा लेफ्ट टू आरंभ करिबा लेफ्ट टॉप कोन रहिला एड्रेस नेम एंड एड्रेस रहिला तापर डेट रहिला एला इथ्रु हमें एटा हमें क्वेश्चन पाउचे कि नहीं एटा हमें क्वेश्चन पाउचे तो क्वेश्चन जरा हमें खोजी के लिखि दो ठीक जगह रे एक मार्क हमको मिली गला तापर हमें का पाको लिखुछु द एडिटर हां हमें लिखि परिबा टू द एडिटर एटा द एडिटर मध्ये कहि परिबा टू द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस को पेपर द इंडियन एक्सप्रेस एथरे कमार किसी आवश्यकता नहीं देले चलेबो न देले किसी असुविधा नहीं तेणु एटा गला एथरे तुमर पिला माने आधा मार्क अछि एड्रेस का पक लिखुछ सेथरे मध्ये आधा मार्क रहिछि एमो सेटा मध्ये क्वेश्चन अछि कि नहीं यस और नो एड मध्ये अछि क्वेश्चन रे पाई परिबा एवं सब्जेक्ट जोटे कंटेंट अब सब्जेक्ट रहला ए सब्जेक्ट ता हमें एठी मध्ये लिखि परिबा का अब सब्सक्रिप्शन अगर जो एड्रेस अच्छी एड्रेस क्या पके हम लिखुछु ताको मध्ये सब्जेक्ट ऊपर लिखि परिबा ए तळे लिखले किछि असुविधा नाही तेणु आम एप्लिकेशन सब मुझे प्रिफर कर ऊपर लिखा कौ जगह आमर ये जो अच्छी तुम ये जगह आमर ठीक ठीक अच्छे एटा ऊपर अच्छी आम बेले बेले एठी मते लिखा जाए सर कौ जगह सैल्यूटेशन परे अनेक अनेक जगह सैल्यूटेशन परे मते लिखा जाए ओके हां विश्वास कोन सर द इंडियन एक्सप्रेस सर द इंडियन एक्सप्रेस तड़े सुंदरगढ़ लिखा जरूरी अच्छे कि भुवनेश्वर नहेले कटक लिखि परिबा हाँ यहाँ आम देख आम क्वेश्चन जो दे सुंदरगढ़ लिखाई नहीं आम सुंदरगढ़ रिपोर्ट करुचु
तो ये जगह जो जगह पब्लिश हो क्वेश्चन जब आम ये किसी देनी कौटिकार एडिशन यस बढ़िया क्वेश्चन कौटिकार एडिशन सी अच्छी आम सुंदरगढ़ रिपोर्ट आम सुंदरगढ़ पठे से जगह क्वेश्चन आमको दिगला भुवनेश्वर एडिशन जब दि जाए भुवनेश्वर लिखा जदि किसी दि जाए नहीं यू कैन राइट सुंदरगढ़ बुझेगा जदि से क्वेश्चन किसी थी जे भुवनेश्वर एडिशन आम एडिशन थाए भुवनेश्वर थाए दिल्ली थी कोलकाता थी सम्बलपुर थी राउरकेला थी अनेक जगह जो एडिशन गुड़िक बाहर पेपर गुड़िक प्रिंट हुए तार जब एड्रेस दि जाए आम लिखा ये जदि किसी दि जाए ना एड्रेस तुमको किसी दि जाए न लिखले भी किसी असुविधा ना ठीक अच्छे आम न लिखले भी किसी असुविधा नहीं जब आम लिखिदी पार तो सुंदर लिखिपर ठीक अच्छे एवं ये सैल्यूटेशन पर लिखा जापे जस्ट आम ये जो लिखाई एड्रेस पर आम सब्जेक्ट लिखिले सब्जेक्टा सैल्यूटेशन पर लिखा जापर उभरटा ठीक जो जे लिखले किसी असुविधा ना सैल्यूटेशन आम सब सैल्यूटेशन ऊपर लिखा कि कहीं आम गोटे ऑफिस को पशिया पूर्व कौन प्रथम नमस्कार जनइबा ना प्रथम कहवा से आम या सब आम प्रिफर कर लिखापी तेणु प्रथम ये लिखा गले लिखले भी किसी असुविधा ना ठीक अच्छे सब्जेक्ट जोटा रहा सब्जेक्ट तुम पाइब कौटा आमर क्वेश्चन जोटा अच्छी क्वेश्चन से सब्जेक्ट मेंशन कर कौन लिखा आम चिल्ड्रेन्स डे को जगह हो इन गवर्नमेंट हाई स्कूल उज्जलपुर सेलिब्रेशन ऑफ चिल्ड्रेन्स डे इन गवर्नमेंट हाई स्कूल उज्जलपुर ताल फॉर्मेट तापर आम तौक गोटे फॉर्मेट अच्छी देखा गोटे पॉइंट अच्छी तो ये देख पे तुम सेलिब्रेशन तुम हाफ मार्क रहा सब्जेक्ट हाफ मार्क देर ना सब्जेक्ट मार्क ना तुम सेलिब्रेशन मार्क अच्छे हाफ मार्क रहा एड्रेस हाफ मार्क रहा तुम कोर्टे डेट एवं क्या पाक लिखुच तार एड्रेस हाफ मार्क रहा सेलिब्रेशन हाफ मार्क रहा एथर पिला 2 मार्क आम पाऊँ ठीक अच्छे 2 मार्क पाऊँ आम देखा आम देखा चिल्ड्रेन्स डे यहाँ केमती लिखागला चिल्ड्रेन्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन गवर्नमेंट हाई स्कूल उज्जलपुर at 11 AM by the students and teachers with very joy and enthusiasm इतने कौन कराला चिल्ड्रेन्स डे लिखागला सेलिब्रेटेड है को जगह पालन कराला लिखी दिगला एवं समयटा लिखी दिगला टाइम एवं प्लेस लिखी दिगला एवं क्या द्वारा पालन कराला पर्सन्स हु आर इन्वॉल्वड हियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स विथ वेरी ये एक्सट्रा मुझे जोड़ी देती वेरी जॉय एंड एंथुसियाज्म एटा न लिखले भी किसी असुविधा ना जदि भल लगे तुमको लिखिपर and students from class 1 से को पिला पार्टिसिपेट कले students from class 1 to class 10th participated in the celebration एवं से को मैंने पार्टिसिपेट कले class 1 to class 10 एवं से कौन सब करागला डिबेट है सॉन्ग है डांस है एवं बोथ द सीनियर एंड जूनियर लेवल्स जेहेतु क्लास 1 ରୁ क्लास 10 अच्छा तेणु सीनियर एवं जूनियर लेवल कंपिटिशन एवं were conducted among the students and who are the invited guests there parents asitile were also present to the witness the program देखिबा पे आइतले से माने and the performance of the students were very commendable एटा किसी सैंपल दिया तो मान को एथरो तमे जति के इंपोर्टेंट माने केबे केते बडे हितला को जगह हितला को माने एनवायरनमेंट थिले को माने पार्टिसिपेंट थिले को माने विटनेस थिले एक किसी पॉइंट गुडे वाक्य लिखिबा हमें तापर हमें आपको जीवा कंक्लूडिंग पैराग्राफ आम करवा गोटे पैराग्राफ था कंक्लूडिंग पैराग्राफ आमको जीवा कंक्लूडिंग पैराग्राफ कौन लिखा अच्छी द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वाज द चीफ गेस्ट से प्रोग्राम रे किए आसी आम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को आम इनक्लूड कर वाज द चीफ गेस्ट ऑन दिस ओकेजन ही अवार्डेड प्राइज से कौन कल भूमिका कौन थी ही अवार्डेड प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट टू द विनर्स जो मैंने जो कंपिटिशन होता से कंपिटिशन जो मैंने पार्टिसिपेट करते विनर मान को प्राइज देते से and the competitors he advised the students कौन कहले हम तो प्राइज देले हमरे ना तो पण किछि कहि देबे ताकू मते हम नोट करि छैतरे कौन कहि से what he advised the students to study hard for their better future quotation this एरा quotation लिखा जाय छै अधिक लिखिबा नै बेसी लंबाइबा दरकार नै काहे कि हमको शॉर्टली रिपोर्ट करबा अछि and our arrangement thila what is the arrangement there refreshments were served to all who were present there समस्त रिफ्रेशमेंट चा नास्ता दिया जाता द कोऑर्डिनेटर कौन करते जे कोऑर्डिनेट करते प्रोग्राम टाको कोऑर्डिनेटर थैंक द चीफ गेस्ट द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द पर्सन्स हु वर प्रेजेंट इन द हॉल एटा कंक्लूडिंग पार्टा एटा टिके लंबा है साधारणतः ये जो एटा गोटे नरेशन जेतु आम चिल्ड्रेन्स डे एवं गांधी जयंती है कि शिशु दिवस आमर गुरु दिवस है
ये भाया प्रोग्राम जो नरेसन आसो टे दुईटा पैराग्राफ देवाक पड़ो कहीं गोटे कौन सब है किए पार्टिसिपेट करते आ कंक्लूडिंग पार्ट रे लंबा होता है सर्ट कर नॉर्मली एटा गोटे जी सब एस्पेक्ट कवर कर लिखा जाए तेनाली लंबा है तुम जेहतु काटिदे पार कि लिखि पारे और भल ये 2 मार्क्स रही है देख पे आमर विथ रिगार्ड्स राकेश मिश्र खाली सिग्नेचर ये सिग्नेचर रहा आम तले ये रिपोर्टर लिखले भी किसी असुविधा नहीं लिखिदे भी भल न लिखले भी किसी असुविधा नहीं है तेणु ए तुम विथ रिगार्ड्स राकेश मिश्र किए तार यहाँ फुल सिग्नेचर ये जो आसला राकेश मिश्रटा यहाँ तार फुल सिग्नेचर तुम जो परीक्षा तुम जहाँ तो ना जहाँ भी हो सुनीता साहू हो कि आलोक प्रसाद मिश्र हो तुम जहाँ भी ना था तुमको क्वेश्चन जो ना थी से नाटा तुम सिग्नेचर कर तुम हाफ मार्क रहा ये आगु आम देखी टिके आगे जावा आम एम देखी हाफ मार्क रहा हाफ 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 एवं ये सब्जेक्ट हाफ मार्क रहा एथु तुम 2.5 मार्क रहा एवं 2.5 मार्क रहा एथु हाफ मार्क आसला कोटा आमर एटा रहा सब्सक्रिप्शन जो रहा राकेश मिश्र सिग्नेचर हाफ मार्क रहा 3 मार्क होगला एवं बाकी कंटेंट पेटा 2 मार्क आसला देखिपर यहाँ केतटा मनरे प्रश्न आसो तुम निहाती भाव में आमर जो फर्माट मुझे देली तुमको एठारे ये फर्माट रे सब बाँ पटू आरंभ करवा नेम एड्रेस डेट का एड्रेस ऑफ द एड्रेस होम वी आर राइटिंग एडिटर इंडियन एक्सप्रेस ए तुम एड्रेस दे पार सुंदरगढ़ दे पार कि राउरकेला डिविजन को लिखापी राउरकेला एड्रेस देवाई तो लिखिपर न लिखले किसी असुविधा ना मार्क्स मिल एवं सब्जेक्ट रैलुटेसन रंटेन्ट रहा कंटेन्ट रहा आमर कंक्लूडिंग पार्ट रहा कंक्लूडिंग पार्ट पर आम सब्सक्रिप्शन आसला सिग्नेचर सिग्नेचर आसला सिग्नेचर आसला आम यहाँ रिपोर्ट को एंड है ये भाव में आम प्रिफर करवा जो नरेसन आसूँ नरेसन गुड़िक साधारणतः 2टा पैराग्राफ छोट छोट पैराग्राफ कर तुम गोटे आसला रिपोर्ट रिपोर्ट द एडिटर कि रिपोर्ट एज ए रिपोर्टर यू हैव टू रिपोर्ट द एक्सीडेंट हैपेंड इन योर लोकालिटी कौन सी एक्सीडेंट जब है गोटे पैराग्राफ लिखिपर ओनली सिंगल पैराग्राफ यू कैन रिपोर्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट ये भाया क्षेत्र में लिखिपर ठीक अच्छे तो यहाँ आम रिपोर्ट राइटिंग आम प्राक्ट करवा किसी प्रश्न तुमको दि जाए सपोज यू आर चिन्मय साहू ऑफ राउरकेला वर्किंग एज ए रिपोर्टर फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन अबाउट 60 words on the outbreak of diarrhea in your locality. Diarrhea विषय लिखा अच्छे क्वेश्चन नंबर 2 suppose you are Ratnakar Behera of Rajgampur working as a reporter for the New Indian Express. Prepare a report in about 60 words on the blood BLOOD এটা গোটে কোড লাগিব BLOOD blood donation camp organized by Rashtriya Vidyalaya Rajgampur on 74th Republic Day. तो ये सैंपल एटा गोटे सैंपल जोटा कि हमारा रिपोर्ट राइटिंग बेले बेले एमती भी आसे राइट रिपोर्ट ऑफ योर वन महोत्सव टू ये तो आसो से गोटे आसे वन महोत्सव पालन कर तुम वन मैगजीन पे गोटे रिपोर्ट दिया कि स्कूल मैगजीन पे गोटे रिपोर्ट करा तो से जगह जो सेमती आसे तो प्राय आसे नहीं 2022 मसीह तो मुझे देखी गोटे क्वेश्चन एटा गोटे क्वेश्चन अच्छी जो क्वेश्चन टा कि आसी 2022 मसीह तेणु मुझे धरी से राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल एथरे किए लिखिब क्या पाक लेखागला किसी लिखा जाए तो से क्षेत्र में कौन करवा अच्छी आम स्कूल मैगजीन जो चिल्ड्रंस डे लिखा जाए क्या रिपोर्ट करवा अच्छी किए करेंगे रिपोर्टर जहाँ ना एड्रेस हो से जगह तुम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गोटे थाए सिक्रेसी मेंटेन करवा अच्छे सिक्रेसी मेंटेन करवा माने तुम निजर ना केवे लिखिब ना से जगह XYZ लिखिदे पारिबा XYZ आम जदि किसी ना देला ना निजर ना केवे मेंशन करवा ना से जगह XYZ कि ABC PQR एमती किसी देखा जाए जो धरा जाए एटा पिलार नाटा गोटे एवं से जगह कौन कर टू द एडिटर से फॉर्मेट मेंटेन कर से फॉर्मेट मेंटेन करवा एड्रेस रहा डेट रहा प्लेस रहा प्लेस तुम एग्जामिनेशन हॉल लिखी दो प्लेस एग्जामिनेशन हॉल जदि किसी आसला नहीं प्लेस एग्जामिनेशन हॉल तापर तुम एड्रेस रहा एड्रेस से तुम एग्जामिनेशन हॉल डेट जो दिन लिखिद से दिन डेट पकेब एवं कौन करवा अच्छे तुमको रिपोर्ट कर जेहेतु टू द एडिटर रहा तुम
एक्यूरेसी मेंटेन करवा अछि एवं ठीक सही परफॉर्म रे से फॉर्मेट हमको मेंटेन करवा अछि जे हम केमते रिपोर्ट करवा अछि जो फॉर्मेट तुमको दिया गला टिकी आगु से फॉर्मेट को मेंटेन करबा नियति भाबरे काहे कि सेतिर जो मार्क अछि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा रिपोर्ट राइटिंग ता अनेक प्रकार लिखा जाई पारे केवल टाइटल लिखि दिया जिवो तापर रिपोर्टर रहइबो तापर सिग्नेचर मध्ये रहि पारे सेटा मध्ये फॉर्म अछि कि से फॉर्मेट को जीवा नै काहे कि सेटा प्रैक्टिकल लाइफ रे हम करि परिबा बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम से फॉर्मेट को जो फॉर्मेट तुमको देले से फॉर्मेट में एंटर करबा ठीक अछि नाउ इट इज टाइम फॉर योर टेस्ट वर्तमान एटा में डिस्कशन करले कोन ऑनसीन पैसेज एवं समरी राइटिंग सॉरी रिपोर्ट राइटिंग एवं रिपोर्ट राइटिंग बदलटा गोटे समरी राइटिंग आसीबो नेक्स्ट क्लास आमे पुणी तुमको समरी राइटिंग विषय जणेबू एवं वर्तमान समय हो जाइए वर्तमान टेस्ट पई आर यू रेडी वर्तमान तुम समस्त प्रस्तुत अच्छा ठीक अच्छे वर्तमान समस्ते निज निजर एमसीक्यू जो पेपर तुमको दि जाइए गोल बुलेवा सर्किल करने से तुम वर्तमान नंबर 1 रु वर्तमान क्वेश्चन दि जाइए क्वेश्चन दि जाइए 30 क्वेश्चन अच्छी फुल मार्क 30 प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क एवं तुमको गोटे मिनट समय मिल गोटे मिनट समय भितर एप्रोप्रिएट आंसर रे ताको डार्कन करबा अछि गोल बुलेबा अछि ठीक अछि क्वेश्चन हियर द postmaster was a day's fellow options are there thin cheerful fat kind fat amiable thin amiable चारटा समेत जोटा तो ठीक भावली भाबुछ सही नंबर अगेंस्ट रे ए बी सी डी चारटा भी जोटा ठीक भाबुछ से जगह तुमको डार्कन करबा अछि आई थिंक यू मस्ट हैव प्रोवाइडेड the sample your OMR answer sheet of the MCQ. Next question, according to Lencho, the little raindrops were like new coins, 10 cent pieces, 5 cent pieces, 2 pesos. Question number 3. Lencho requested God for monetary help of 100 pesos in order days. So his field again, rebuilt his house, life, and so his field again and life. Live, sorry, that is a live actually. Not life, live. What are Lencho's smaller children doing until their mother called them to dinner? Playing in the valley, playing near the house, walking in the field, collecting hailstones. Lencho was an ox of man. The expression means, ये sentence दिया गला, Lencho was an ox of man, तार अर्थ कौन हटे? Lencho was an ox in every respect. Lencho toiled like an ox in the field. Lencho had the resemblance of an ox, none of the above. Number 6. In all things bright and beautiful, things are described wise and days, wonderful, skillful, willful and blissful. Question number 7. In all things bright and beautiful, the mountain tops looks days, purple, green, blue, red. The roses grow by the days, hill, desert, water and mountain. How does Chef Alexander describe the wings of the birds? How does Chef Alexander describe the wings of the bird? As bright, as tiny, as beautiful, purple. How does Chef Alexander describe the wings of the birds? As bright, as tiny, beautiful, and purple. He gave us eyes to see them, and lips that we might tell. These are lines from the poem All Things Bright and Beautiful. Who is he in the above lines? He kale kagu buja jauchi. God, our father, the poet, our mother. Our teacher, our father. Our teacher, the poet, our father. According to Gandhi, there was nothing to memorize in days. Persian, Sanskrit, geometry, geography. According to Gandhi, there was nothing to memorize in days. Persian, Sanskrit, geometry and geography. Number 12. Gandhi retained his false notion about handwriting until he went to South Africa, England, America and Ahmedabad. नंबर 11 जदि तुमने करिपारे जल्दी स्किप होई जे भाबुछ ताले तुम जो मैंने लाइन रे अछ लाइन गवर्नमेंट उज्जवलपुर और कौन सा स्कूल है ये व्हाट वाज गांधी वेरी केयरफुल अबाउट हिज सर्टिफिकेट कैरियर हिज कैरेक्टर हिज फादर्स ऑनर व्हाट वाज गांधी वेरी केयरफुल अबाउट केयरफुल्ली सेटा चली टिके मिस्टेक अछि केयरफुल अबाउट वेरी केयरफुल अबाउट एनीवे द आंसर इज 4 ऑप्शंस यू कैन सिलेक्ट वन आंसर इज ऑलराइट very careful about. Number 14. What came directly in the way of serving his father? Regular presence in school, his interest in Sanskrit, compulsory exercise, and father's unwillingness. What drew tears from Gandhi's eyes? What drew tears from Gandhi's eyes? Gandhi को आखिर अश्रु केमती कहीं बढ़ला? कौन पे बढ़ला? Least little blame is punishment from teachers. His absence from gymnastics,
father's illness? Who named the tiger cub Timothy? Who named the tiger cub Timothy? Ruskin Bond, Bond's father, Bond's mother, Bond's grandmother. At night, Timothy slept. At night, Timothy slept in the drawing room, in the cook's quarter, in the bedroom, in the gardener's quarters. राति समय Timothy को जगह सोतला. Normally, what was his habit? In the drawing room or in the cook's quarter, in the bedroom or in the gardener's quarter. Timothy's favorite place in the writer's house. Timothy's favorite place in the writer's house was the cook's quarters, the poultry house, drawing room and Pamu's room. Timothy's favorite place को जगह थिला. को जगह से दिन सारा बिताउथला. Prefer कोटी कोथला बसिबा पाए. The Jew at Days was 200 miles away from the author's house. Jew at Days was 200 miles away from the author's house. Jew रा जगह को जगह रची नाटक होइबो कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ and Kanpur. Timothy had died of days 2 months ago. Timothy had died of days 2 months ago. Pneumonia, dysentery, diarrhea, cholera. ପିଲାମାନେ pneumonia, diarrhea, dysentery, cholera यार spelling गुड़ा टिके मन रखिथिबो जेतो long question आसे सेडा लिखिबा पय ले टिके तुमको spelling गुड़ा के आनिबा निहाती दरकार. Pneumonia एतरे p silent अछि, dysentery y silent अछि. Next, Bodhiya Singh is out of breath because he danced around the playground for 2 hours. এটা grammar ରୁ ଆସିଗଲା. Bodhiya Singh is out of breath because he danced around the playground for 2 hours. Has been running, had been running, running, is running and was running. What days? At 7 o'clock yesterday evening. Have you been doing? Where are you doing? Have you done or are you doing? It days any new clothes for years. Not bought, will buy, has not bought and have not bought. It days any new clothes for years. Okay. Which one of the following is an imperative sentence? Sentence spelling take mistake है जी पिलावने SEN P table like SEN SEB है इसी सेटा mistake printing हमारा typing mistake error है इसी तरह. Which one of the following is an imperative sentence? SEB है इसी SEN TNC आवा सेटा. Katagi जान the Mahanadi. Satyaranjan teaches English grammar and beware of pickpockets. And last one is he is going to sell his car after Holi. Imperative sentence. Said B ta city rahi bani. SEB है ये ची. Spelling mistake होची सितरे. SENTNC typing error होची सितरे. Number 25. State which of the following is grammatically acceptable. कोटा ग्रहण योग्य अटे को वाक्यटा देखियो. What a beautiful garden it is. What a beautiful garden is it. What beautiful garden it is. What beautiful garden is. Number 26. He tried hard. This he did not succeed. Appropriate coordinator लगेगा. But and but or in other ways. He tried hard. This he did not succeed. The governor and chancellor of the university has been invited to this function. Is are has or have. His brothers as well as his uncle. His brothers as well as his uncle responsible for his success. Is are has or have. पिलावने टिके हमें 29 मुझे देखे देवी ऐटा देखे दिया. The jury days divided in her opinions. In their opinions. ऐटा their अब टी लगी वो गोटे their opinion. The jury divided in their opinion. Option was where, has and have. Past number 30. A herd of elephants days seen in Sundargarh last year. A herd of elephants days seen in Sundargarh last year. Option is here is where, are and watch. Okay, dear students, did you complete? तो पिलाने वर्तमान समाप्त कर देजा, complete कर देजा. तमें दिवा MC उत्तर को जीवा. Okay, let's see the answer. The postmaster was a day's fellow. Postmaster was a day's fellow. Please response it. रेस्पॉन्ड करियो पिलावने उत्तर हमें शीघ्र जीवा टिके उत्तर कोन हो गइला कोन लेके जा निजे The postmaster was a fat amiable fellow. बहुत बढ़िया, thank you. Next question. According to Lencho, the little raindrops were like 5 cent pieces. 5 cent pieces or 10 cent pieces? 5 cent pieces. Yes, 5 cent pieces right answer. 5 cent pieces is right answer because little rain, little raindrops. Big raindrops के लिए 10 cent भी दे देते. Little raindrops का ये 5 cent pieces is right answer. Okay, thank you. Next question. Lencho requested God for monetary help
of 100 pesos in order to sow his field again, rebuild his house, live, live, and sow his field again and live. Whatever. Sow his field again and live. Okay, fine. बहुत बढ़िया. Thank you. Sow his field again and live. निजर खाता को निजर जो ओएमआर आंसर शीट पाइछ से आंसर शीट टिक मारुत नंबरिंग केतरा केतरा की केतरा नंबर पाइबो लास्ट जणा पड़िबो. सब्जेक्ट टीचर जमा दबो ताको. What were the lunches smaller children doing until their mother called them to dinner? Playing in the valley, playing near the house. Okay, fine. बहुत बढ़िया. Thank you. Near the house. Very good. बहुत बढ़िया. Okay, thank you. Next question. Lencho was an ox of a man. The expression means Lencho was an ox and every. Like an ox in the field. An ox in the field. Lencho like an ox in the field. But very good. Thank you. All things bright and beautiful things are described wise and Option A, wonderful. ସବୁ ଠିକ କରି ପାରୁଛତା ପିଲାମାନେ ନିଜର କରସ କରି ପାରୁଛତା. Sir, home. Okay, thank you. Wonderful. Number 7. In all things bright and beautiful, the mountain top looks. Looks purple. Option A. Okay, fine. बहुत बढ़िया. The roses grow by the. Water. Option C, water. Option C is the water. Water is the right answer. Option C is the right answer. Okay. Option C. Number 9. How does C.F. Alexander describe the wings of the birds? As tiny. As Option tiny. B, Okay. as tiny. Option B is the right answer. As tiny. Okay. Fine. बहुत बढ़िया. Number 10. He gave us eyes to see them and lips that might tell. He कले काग पूजा पड़छित रे? God. Option A, God is the God. right answer. Option A is the right answer. God is the right answer. Please take your answer sheet. Number 11. According to Gandhi, there was nothing to memorize in days. Geometry. Option C, geometry. Yes, geometry is the right answer. Yes, very good. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर दोचे पिलावाने, बहुत भला बुझे से जଣା पड़ुचे. Number 12. Gandhi retained his false notion about handwriting until he went to days South Africa, England, America, Ahmedabad. Option number A, South Africa. South Africa. नहीं देखिला टिके बॉय को देखिला कौन England. Option B, Yes. England. England is the right answer. Good. England is the right answer. Handwriting ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ କୁ ଯାଇଥିଲେ ତା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ଭାବୁଥିଲେ କି handwriting ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି. ଯେତେ ଇଂଲଣ୍ଡ କୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ handwriting ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ କି ନା handwriting should be good. ତାପରେ number 13. What is Gandhi very careful about? Careful about. What about? His character. His character. Okay, Option C. Option C the character. Yes, his character. He was very careful about his character. What came directly in the way of serving his father? Option C. Compulsory exercise. Compulsory Yes, exercise. very good. Compulsory exercise is the right answer. Good. Very good. Compulsory exercise is the right answer. C. Number 15. What drew tears from Gandhi's eyes? Least little blemish. Yes, good. Least little blemish is the right answer. What drew tears from Gandhi's eyes? Least little blemish drew tears from Gandhi's eyes. Okay. Who named the tiger cub Timothy? Yes. Grandmother. Bond's grandmother. Grandmother. Bond's grandmother. Okay, fine. Bond's grandmother. बहुत बढ़िया. Thank you. Number 17. At night, Timothy slept. In the cook's quarter. In the cook's quarter. In the cook's quarter. In the cook's quarter. Okay. In the cook's quarter. Fine. बहुत बढ़िया. B with the right answer. Timothy's favorite place in the writer's house was this. The drawing room. Drawing room is the right answer. Good. Very good. Well done. बहुत बढ़िया. Drawing room. Number 19. The Jew at days was 200 miles Lucknow. away from the author's house. Lucknow. Lucknow is the right answer. Good. Very Lucknow. good. बहुत बढ़िया. पिलाने ये बड़े यदि उत्तर दबा ताले 50 पाई जाओ. No doubt. I'm sure. बहुत बढ़िया. अबले Timothy had died of days 2 months ago. Pneumonia. Pneumonia. Pneumonia is the right Pneumonia. answer. Yes, good. Very good. Pneumonia is the right answer. तो जहाँ कुछ पिलाने ता आंसर बारी यूज. Odaya Singh is out of breath because he dazed round the playground for 2 hours. Has been running. Has been running. कहीं की हवा जानी जा? Has been running. Option A is the right answer. ठीक अच्छी है. कहीं की हवा कोई लो देखिए.
had been running कहीं हवा नहीं Present perfect progressive. एटा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मीन करूची बोधिया सिंह इज आउट ऑफ ब्रेथ प्रेजेंट टेंस दला इज आउट ऑफ ब्रेथ तो वर्तमान से धैर्य हे जाउची कारण 2 घंटा पूर्व से दौड़ी आसुची प्रेजेंट टेंस को रेफर करूची तेणु एटा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रे रहिबो ठीक अछि बहुत बढ़िया व्हाट डेज एट 7 o'clock yesterday evening कौन अब उत्तर Option D. Are you doing? केन अतर को Where you been? Where you doing? where you doing yes what where you doing देखो एथि दे yesterday evening past tense दला तेणु गत काली तुम इवनिंग रे कौन करथला what were you doing at 7 o'clock yesterday evening particular time रे what was going on past time रे particular time रे कौन चालुथला कजे past progress को रेफर करिवो that's why it is past progressive what were you doing at 7 o'clock yesterday evening ठीक अछि बहुत बढ़िया sit days any new clothes for years कौन बा Has not. Option B. Will buy. option Will buy. Option B. Option B. Will buy. अन्ना will any new clothes लागला माने हम for years एटा में नेगेटिव सेंटेंस को जीवा any new clothes Bought. The negative Has not sentence. bought. has not Has bought not bought. Option C. C. option C okay option C the right answer C third person singular तो has आसीबा has not bought any new clothes for years अनेक वर्ष होइछि से जम्मा क्लॉथेस खरीदनी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रेफर करिवो तो हैज नॉट बॉट एनी जेतु अछि हम नेगेटिव सेंटेंस को देखिवा ठीक अछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस इ भितर कोटा इंपेरेटिव सेंटेंस अछि कहला यस स्पीक अप Kotak is on the Mahanadi. imperative sentence where there is no subject Beware of pickpocket. Option C. okay Beware fine of बहुत बढ़िया pickpocket. Beware of pickpocket. okay fine beware of pickpocket the right answer काहे कि इंपेरेटिव सेंटेंस कले जो जगह रे रिक्वेस्ट थो जो जगह रे वार्निंग दिया जिथबो जो जगह रे एडवाइस दिया जिथबो जो जगह रे कमांड दिया जिथबो ए भले जोटा थिबो जोटरे कि हमें सब्जेक्ट को मेंशन करबा किछि आवश्यकता ना थाए सब्जेक्ट को लिखा जाए ना यू beware of पॉकेट्स को आ जाए नहीं कि यू स्टैंड अप को आ जाए नहीं कि यू प्लीज गिव मी योर पेन एमडी को आ जाए नहीं सब्जेक्ट को ओमिट कर दिया जाए लिखा जाए नहीं तो से गुटे हम इंपेरेटिव सेंटेंस जो थे कि सब्जेक्ट न थाए सेटा गोटे रिक्वेस्ट होइतबो कमांड होइतबो जेमि तुम्हारा एडवाइस होइतबो सजेशन होइतबो एगुडा सब इंपेरेटिव सेंटेंस को आ जाए पढी छे सेगुडा को ओके beware of pickpockets 25 state which of the following is grammatically acceptable कोटा ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल होटे एटा गोटे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चारोटी दिया गला सेमते कोटा ठीक What a beautiful garden it is. What a beautiful Okay. garden it is. Beautiful garden it is. यस वेरी गुड बहुत बढ़िया व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज बहुत सुंदर वाले कहलो बहुत बढ़िया ऑप्शन ए ही ट्राइड हार्ड डेस ही डिड नॉट सक्सीड ट्राइड What? हार्ड बट इज द राइट आंसर काहे कि कष्ट कला किंतु सक्सीड हे पल्ला नहीं तो रिवर्स ता अपोजिट को देखा होची न सेडा बट को लगेबा ठीक अछि ही ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट succeed okay thank you and the governor and chancellor of the university days been invited to this function Option C has. काहे कि हे आसीबा Option कहला C देखि हेज काहे कि आसीबा एतरे केते जण अछंती गवर्नर एवं चांसलर दुई जण अछंती ना जण अछंती यस को एटी हेज होता ठीक अछि किंतु एटे केते जण अछंती जण अछंती दुई जण अछंती एटी यदि लागि थांता द चांसलर ताले हमें हेव लगी थांते Governor ठीक to अछि jane मनीष. यस हां गवर्नर जणे मनीष आ गोटे चांसलर अछंती कि नहीं किंतु से जगह हमें जानिबा केमती जणे लोक गवर्नर जी चांसलर से केमती जानिबा एटी द लेखा जाय नहीं ए दी शब्दटा लेखा जाय नहीं तेणु आम जानिबा सेटा जणे लोक जे गवर्नर अछंती से चांसलर मध्ये अछंती किंतु जदि क्वेश्चन आसीबा द गवर्नर एंड द चांसलर से जगह अलग अलग लोक अछंती गवर्नर जणे अछंती चांसलर जणे अछंती से जगह कोन लगेबा तुमे एफ को लगेबार अछि एटा बुझि पाइला यस और नो ओके see next his brothers as well as his uncle dash responsible for his success Is. Option A is. आर्टिके देखिलो टे भलो भाबरे कोन हबा have पर कोन अछि responsible गोटे अछि Has. Option C his has. brothers as well as his uncle have पर गोटे भार आसीबा कथा किबा गोटे नाउन रहिबा कथा तो एटा नुह is किबा आर विद कोड हबो ठीक कहला R. Option B R. आर यस आर काहे के हबा इथरे जो दिया गला तुमको हिज ब्रदर्स Plural थिबारु. एंड हिज अंकल ए जगह रे जो भावटा अछि कोडा रेस्पोंसिबल ए जो भाव रहबो ए भाव जो रहबो ए भाव का से एग्री करबा फर्स्ट नाउन फ्रेज से एग्री करबा एज वेल एज जेतु अछि एज वेल एज रहिला माने
ए जो भार्ब आसीबो ए भार्बटा का सहित एग्री करिवो एग्रीमेंट करिवो या सहित एई हिज अंक सहित एग्रीमेंट करिवो नाही तेणु एटा हबो जेतो एटा प्लुरल हिज बदल जे प्लुरल तेणु एठी आर रहिबो केला ओके द jury days divided in their opinions Option B where. where very good Where. बहुत बढ़िया Option B where. very good was where have divided एटी have अछि ना ए जे डिवाइडेड अछि एटा एक्टिव वॉइस रे अछि वाक्यटा एक्टिव वॉइस रे अछि वेयर कले कोन हबो वेयर टा पैसिव वॉइस को जीवो वेयर पर डिवाइडेड एटा हमको जेटा से हमर जो एग्रीमेंट अछि तर कोन स्ट्रक्चर टा मैच करूनी वेयर डिवाइडेड हेई पारे बट किंतु एई जगह जो स्ट्रक्चर अछि सब्जेक्ट जुरी रहिला याको इंपोर्टेंट दे अछि दी एक्टिव सेंटेंस जे दुटा एक्टिव सेंटेंस अटे तो एई जगह रे हमें वेयर को नेबानी नेबा कोन अटे have ku neba the jury have divided in their opinions jury कहले जो जज माने थांती एटारे तांकर opinions their opinions तो ए जगह तांकर भिन्न भिन्न मत अछि तो ए jury टा ए जगह रे singular अछि सॉरी plural ए jury टा ए जगह रे plural अछि jury टा plural तणु have आसीबो ए well divided कहले हम passive form को बोले परि जिबा तो एते passive structure नाही ए सेंटेंस टा एक्टिव स्ट्रक्चर अछि तणु एथे हमें have को लगेबा the jury have divided in their opinions ठीक अछि is that clear yes or no Yes sir. Yes. okay thank you आउट रहिला तुम्हारा लास्ट दुईटा क्वेश्चन एटा गला तापर लास्ट वन एटा देखो a hard up elephant days seen in the Sundar Was. last year was it written here Was. इतरे was एटा was काहे केला was काहे केला a hard up elephants a group of एटा सिंगुलर हमें ताको सिंगुलर से नबा जदियो elephants ता plural जदियो elephants ता plural बडी हमको जणा पडुची a hard up elephant कहले एटा सिंगुलर हे गेला गोटिए दळ आ गोटे हाथी पळ को हमें सिंगुलर नबा तेणु a hard up elephants was seen in Sundargarh last year हला खाली जदी elephants थांता elephants were seen in Sundargarh last year जदी a hard up elephants गोटिए दळ तेणु सेटा को हम सिंगुलर नबा तेणु समस्ते निज निजर भैल्यूएसन करदेला निजर खाता करेक्शन करदेला एमसीक्यू यस और नो Yes sir. ओके थैंक यू तेणु आम आज देखिले कौन प्रथम डिस्कस ओके आज आम प्रथम देखिले कौन देखिले जे हमर सब्जेक्टिव पार्ट ओके ओके थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम एंड आज आम देखिले जे प्रथम रे कौन आम सब्जेक्टिव पार्ट रे 2.5 मार्क्स दीटा आम डिस्कस करले 5 मार्क्स दीटा डिस्कस करले ता सहित ऑनलाइन पैसेज देखिले तापर रिपोर्ट राइटिंग केमती करा जो देखा गला हमें पढ़ले एवं तापर हमें 30 मार्क्स एमसीक्यू टेस्ट करले एवं या पर तुमको आगुटे दिया जेथबो टिके रेस्पॉन्स करिवे पिले कोन से गोटे स्कूल को लिंक देबे और रेस्पॉन्स करेबे जे से माने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाइछन्ते ना बेटी पहुंचे देबा एटा स्कूल दे दीजिए पूछ लेंगे अच्छा पिला माने तो कहलो देखि तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाइछो कि नहीं आज सकाळो हमारा हेडमास्टर ग्रुप को सब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 मार्क्स पठे दिया जाइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाइछो कि नहीं एनी क्वेश्चन एनी स्कूल प्लीज रेस्पोंड हाँ सर पाइछो टेस्ट स्कूल टेस्ट हे जाइए ना हे नहीं हे जिसे तो करिछो तो समझते हाँ सर है समझते अटेंड करछो एग्जामिनेशन ओके थैंक यू वेरी मच तेणु आज आम जोटा डिस्कस करागला एवं जोटा टेस्टा तुमर आमर क्वार्टर 1 जोटा FA1 कहे क्वार्टर 1 जी परसेंट थी सेटा आम टेस्ट करूँ आज एवं आसंता वीक रे तुम क्वार्टर 2 रु हम तो देख सब्जेक्ट जो पचार तुम मैंने तुम क्वार्टर 2 रे कौ पर्सन गोटे अच्छी कौ टपिक गोटे अच्छी से टपिक उपर पुणी से गोटे 30 मार्क्स एमसीक्यू एवं 30 मार्क्स सब्जेक्टिव टेस्ट एवं तुम अन्य किसी से क्वार्टर 2 रि सब्जेक्ट तुम रिविजन क्लास हो पार तेणु ये पार्टिसिपेट कर बहुत सुंदर भाव आज पार्टिसिपेट कर समस्त को धन्यवाद एंड मुझे आशा करी आम आशा करूँ तुम मैंने भल नंबर रखिक इंग्लीश भल नंबर रखिपर चाहिए सब्जेक्टिव 50 ରୁ 50 मध्य रखिपर और सब्जेक्टिव 50 ରୁ निहाती भाव में 45 आने किसी कष्ट नुहे जस्ट टू प्रैक्टिस कर थैंक यू वेरी मच एंड once again I would like to request our thank you very much I welcome our Satyaranjan sir to speak something about related to the course examination. Really, it was a gorgeous class,
I would also extend my heartiest thanks to Mr. Patel sir, who has actually taken a beautiful class, and really student participation was very nice and interesting. You really cooperated and made the class really gorgeous, and I anticipate you all definitely fair in your school and do your duty with utmost care, and I hope to you will secure really amazing marks in the forthcoming board exam. Once again, I wish you all a very happy and prosperous year, and I wish you your good results. That's all for the day. Thank you very much. Thank you very much.